Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computer science student and you are watching Node University. In the series of learning Python, this is our 81st lecture and here we will be discussing about Python file handling part 4, right? And in this tutorial, we are going to discuss about Python delete file. हमने करंट ऑपरेशन शुरू किया हुआ है जो कि पैथॉन हैंडलिंग में है, राइट। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट फाइल इन पाइथन, रीड फाइल एंड अलॉन्ग विद दैट हमने आल्सो ये पढ़ा है कि हम किस तरह उसको राइट भी कर सकते हैं। एंड here we will be discussing about python delete file, right? How actually we can destroy or delete something that we have already created. Let's say some file demo file.txt के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट किया हुआ है, तो उसको डिलीट किस तरह करेंगे या कोई फोल्डर वगैरह, राइट? So let's see. Delete a file. To delete a file, you must import the OS module and run its os.remove function, right? In case you wanna run, you wanna delete something like some file, right? या folder. तो आपने ये OS module को first of all import करना होता है, right? And you have to run the os.remove function, okay? इसकी मदद से आपने remove करना होता है. Remove the file demo file.txt. There is a file in our computer with the name of demo file.txt. उसको हम delete कर दें तो किस तरह करेंगे? तो first of all we will import OS, right? OS module and then we are gonna write os.remove demo file.txt. तो इसकी मदद से ये delete हो जाएगा, right? Okay, check if the file exists, right? Before deleting something, you have to check if the file is available or not with us. To avoid getting an error, you might want to check if a file exists before you try to delete it, right? अगर in case आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई error ना आए, राइट? तो आप किस तरह क्या कर सकते हैं, एफ एल स्टेटमेंट की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि इफ अवेलेबल देन डिलीट इट, एल्स सम प्रिंट सम मैसेज टू मी। ओके, चेक इफ एग्जिस्ट, इफ द फाइल एग्जिस्ट देन डिलीट इट, राइट? इंपोर्ट ओएस ओ इफ ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट, राइट, डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी, राइट? तो क्या करो, रिमूव कर दो। अगर इनकेस फाइल इस फाइल का पाथ हमारे पास मौजूद हो, यानी कि फाइल मौजूद हो, देन डिलीट इट, राइट? एल्स हमारे पास क्या करो कि द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैसेज प्रिंट कर दो, फार बेटर देन getting an error. Okay, delete folder. In case you wanna delete the folder, complete folder, right? तो क्या आप कर सकते हो कि to delete an entire folder use the os.rmdir, right? dir का मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Remove the folder my folder. My folder के नाम से हम, for example, let's say there is a folder with the name of my folder in our computer, right? You wanna delete this thing, then you have to do like import os. First of all, import os module and then os.rmdir, right? ये फंक्शन आपने यानी कि चलाना होता है। यू कैन ओनली रिमूव एम्प्टी फोल्डर। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नोट बताता चलो कि अगर केस देयर इज समथिंग अवेलेबल इनसाइड योर फोल्डर, राइट, तो ये फोल्डर आपका रिमूव नहीं होगा। योर फोल्डर तभी रिमूव होगा जब आपका फोल्डर एम्प्टी होगा, राइट? तो ये थी आज की सिंपल सी ट्यूटोरियल। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज में दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज।